Hello students, welcome to all. In today's video we will discuss the detailed solution of math part of Ojee later on into diploma. Means जो पिला माने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करे किंवा +3 साइंस करे इंजीनियरिंग बीटेक करिया पे चाहती तांको पाई गोटे सिलेबस थाए Ojee तरफ से सिलेबस रे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टाइप 40 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स टाइप 40 क्वेश्चंस और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप 40 क्वेश्चंस. सो तारे थ्रू जो मैथ रो 40 क्वेश्चंस अछि ताको हमें आज डिस्कस करिया. ओके, तो से पार्ट अछि हमरा दिस इज द पार्ट ऑफ OJEE 2019 इज ऑफ मैथ पार्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स. दिस इज अ डिटेल्ड solution of math, right? So one by one solution मोटा करिए. आओ तमें वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिखना हो और स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन को लिखना हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चंस. So the first question is the number of 3 digits numbers that can be formed using the digits s equal to 0, 1, 2, 3, 4 up to 8 when the repetition is allowed. से कहि मो पाखर गोटे सेट अछि, सेट रे s गोटे सेट अछि. we have a set s and the elements are 0, 1, 2, 3 up to 8. This means we have total 9 digits including 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 digits. We have total equal to 9 digits. 9 digits. Now using these digits we have to form a 3-digit numbers. Different 3-digit numbers. So how many 3-digit numbers that can be formed? We have to check now. How it is possible? Now start. देखो ये केमती होची. माने कर 3 digit number नेबी मु तीनटा बॉक्स बनेली. This is box 1, this is box 2 and this one is box 3. Okay, from right this is unit place, this is 10 place and this is 100 place. एकक 10 100 1000 बोले unit place, right? So now for 3-digit number, suppose from left to first box टा फिल अप करिया पय जाउछ. फर्स्ट बॉक्स टा मु 0 to 8 भितरे को डिजिट को नहीं करबी हम 0 to 8 भितरे 0 को छाडी की बाकी सब डिजिट नहीं करबी. बिकॉज़ मु यदि 0 देई दोची ताहले जो नंबर टा हबो से आ 3 अंक विशिष्ट संख्या हबो. ओके, सो इट विल नॉट a 3-digit number, it will simply a 2-digit number. just 0 में 8 put कर 0 8 put कले 8 put कले चलो. so मु 0 लेफ्ट बॉक्स बाय इनिशियल बॉक्स रे पुट कर परबी. ताले मु इनिशियल बॉक्स रे केतरा डिजिट पुट कर परबी ना फ्रॉम 1 to 8. ओके, सो मु एटी 8 टा डिजिट पुट करि पारिबी. नाउ 10 जदि मु 10 रे पुट करबी ताले केतरा पुट कर परबी ना 10 रे. the important thing is when the repetition is allowed. If repetition is allowed, I can use all 9 digits including 0 also. So I can use 0, I can use 1, 2, 3 or I can use 8 also. Now I can use all the 9 digits. Okay, in unit place also I can use 9 digits. Now the number of 3-digit number that can be found. तो केतेटा 3-digit number को हमें तैयारी कर परिबा ना एटा डिटरमाइन करा जाय बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. राइट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से गोटे डिटेल्स जिंस अछि मु गोटे को वीडियो ताको मु कहया पे ट्राई करबी. 8 into 9 into 9 फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग होछि. फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग अनुसार द नंबर ऑफ 3 digits that can be found equal to 8 into 9 into 9. This is the answer. Yes, 9 into 9 is equal to 81 into 8 8 268. Right? So 64, sorry. So this is 648 actually. This is your answers. Right? And the multiplication is called fundamental principle of counting.
ये तीनटा को जब हमें कंटिन्यू कर दबा मल्टीप्लाई कर दबा जो मल्टीप्लिकेशन का आसीबो दिस इज द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ओके सो एटा लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन so next question is from a group of 5 men and 7 women 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there in the committee then the question is the number of ways this can be done is this से कहै छी जे हम कोटे कमिटी तैयारी करैला छी आ जो कमिटी रे 3 जण पुरुष कंपलसरी होबे एट लीस्ट ऑफ द कमिटी अति बेसी रे 4 जण 5 जण रहते तो एमती गोटे कमिटी तैयारी करो जो कमिटी रे अति कम रे 3 जण पुरुष रहि पारथबे बाछि भी कोठू ना मो पाखरे ऑलरेडी 5 जण पुरुष गोटे ग्रुप आ 7 जण स्त्री को गोटे ग्रुप अछि ठीक अछि आ मो जो कमिटी रे 3 जण पुरुष को नेबी बा 3 मेन को नि जो कमिटी बनेबी एट लीस्ट 3 मेन को नि जो कमिटी बनेबी से कमिटी रे 5 जण रहतो दरकार सो फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 men and 7 women 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there in the committee. So the number of ways this can be done is yes. Okay. या को भी सेम हमें से फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग यूज करके कर परिबा मोटी लिखि दोछि मेन केते अछन देखो मेन एठी लिखली मेन मो पकरे मेन अछंती 5 आ मेन अछंती 7 सो मु फर्स्ट टर्न करबी ना मो पकरे एटलीस्ट 3 मेन दरकार मो पाखे ये हला नेसेसरी कंडीशन एटलीस्ट 3 मेन दरकार एट मोर 4 5 जा लगे करो यदि 3 जण पुरुष को मो गोटे कमिटी रे अति कम रे नथि यदि मो 3 जण पुरुष को नेबी फर्स्ट ताले आ 2 जण स्त्री को नेबी यदि 4 जण पुरुष को नेबी जण स्त्री को नेबी आ जण 5 जण पुरुष को नेबी मते स्त्री को न पड़िबनी काई मते एटलीस्ट 3 मेन दरकार सो मोडी फर्स्ट नंबर देखो आउट ऑफ 5 5 जण पुरुषों को रू मु 3 जण को नेबी दिस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग combinatorics right permutation and combination तो इस यूजिंग combination तो मु आई कैन सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 5 मु जदी 5 जण को 3 जण को सिलेक्ट कली ताहले पुरुष जदी मु 3 जण सिलेक्ट कली मते वुमेन के जण सिलेक्ट करे पुरे 2 जण केते जण 7 जण 2 जण करे 7 जण को 2 जण सिलेक्ट करे right this is case 1 and we have to multiply this right we have to multiply this how what a case rim करबी जदी मु 4 जण नेबी पुरुष को ताहले से 5 जण 4 जण को नेबी ताहले मते स्त्री लोक को भितरु जण न पड़ो इज इट अगेन केस 3 रे मु जदी 5 जण रो 5 जण को नेबी 5 से 5 नेबी ताहले मते स्त्री लोक को काम भी न पड़ो ताले आंसर कोन ना आंसर होछ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होगी एटा को मल्टीप्लाई करले एटा को मल्टीप्लाई एटा को मल्टीप्लाई बाकी मु कोन करबी तीनटा को ऐड करबी ओके तीनटा को एठी मु ऐड करबी वर्तमान मु एटा को सिंपलीफाई करले मु एठी सिंपलीफाई करतो जे 5c3 NCR n फैक्टोरियल by n minus r factorial into r factorial so 5 factorial 5 टा को लिखली मु 5 into 4 factorial okay by n minus r factorial 5 minus 3 factorial this is 2 factorial into r factorial this is 3 factorial right so 5 minus 3 is 2 into 3 factorials into 7 factorial divided by 7 minus 2 5 factorial into 2 factorial is it so is equal to ये होची 5 factorial divided by 5 minus 4 is equal to 1 into 4 factorial into ये होची 7 factorial divided by 7 minus 1 is 6 factorial into 1 factorial is equal to ये होची in write plus symbol plus दे दोची एटा होची 5 से 5 NCN is 1 into this is also right so it is 5 into 4 factorial मैं डबल ब्रेक कर दे 4 factorial 4 into 3 factorial कर परिवेट हूं ताले 3 3 कटि आउची 2 कटले 2 ही आउची एटी 5 7 factorial कर भी 7 into 6 into 5 factorial okay
So eta यूज करछि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल मो ए जो कांसेप्ट यूज करी ओरा बात करछि ताले मोर एटी 5 5 भी कटिला 85 फैक्टोरियल टाको 5 into 4 फैक्टोरियल लिखली ओके ताले ये भी कटिला मोर एटी 7 फैक्टोरियल टाको 7 into 6 फैक्टोरियल लिखली ये भी कटिला 6 6 4 4 कटला ताले एठी रहला मो पाखरे 5 गुणे 10 गुण 9 7 into 4 42 by 2 10 into 21 एठी रहला मोर 5 into 7 आ एठी रहला 1 into 1 ताले मु सब ऐड कर देली 10 into 21 is equal to how much this is equal to 210 plus 35 plus 1 now 245 this is equal to 246 way this is your answer very easy हमें टाइप आउट टिप्स को बना रखा सो हमें इजीली कर परिया प्रॉब्लम काहे कि डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट वे रे था यदि हमें टाइप ऑफ टिप्स मन रखबा ट्रिक को जानि थबा ताला हम दिस प्रॉब्लम ओके तो या को बढ़िया स्क्रीनशॉट ले जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिया The next problem, the number of terms in the expansion of 2x plus 3y plus 5z whole to the power 5. ओके ये बहुत इजी प्रॉब्लम ए बड़ा प्रॉब्लम असले भी किसी वरी हवा नहीं तो मैं डायरेक्टली किन सॉल्व कर करबो मु डायरेक्टली लिख दो छोटे सॉल्यूशन अतर टिप्स देस मन रखो द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus y plus z to the power n is equal to it is very easy to remember also n plus 1 into n plus 2 by 2 मन रखे बहुत easy right ताले मो पाखे जदी 2x plus 3y यार प्रूफ अछि प्रूफ नहीं करबे to the power 5 is equal to 5 plus 1 into 5 plus 2 by 2 right which is equal to 6 into 7 by 2 now cancel 3 so this is equal to 21 the number of terms is 21 okay so next question the next problem if 1 plus x to the power n is equal to c0 plus c1 and c2x square up to cn to the power n then the value of this particularly combination रो मैक्सिमम प्रॉब्लम और बाइनोमियल थ्योरम रो मैक्सिमम प्रॉब्लम लिखो ए जो रिलेशन भी क्रिएट होता है तो ये रिलेशन हम पाखरे 15 टा एक्सप्रेशन अछि जोटा हमें डिफरेंट वे रे प्रूव करो से 15 टा एक्सप्रेशन मन रखले तमे जे कोन जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव टेस्ट करो नाउ जस्ट आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन फॉर दिस if this we know that then we know that C0 plus C1 by 2 plus C2 by 3 plus up to Cn by n plus 1 you can understand Cn by n plus 1 the 10th to 11 C2 to 3 तो यार जो सीरीज टाइम है ओके जेतेबेला हमें एई भलिया कोनसी गोटे सीरीज को एक्सपांड करिवा आ सिंपलीफाई करिवा तार जो रिजल्ट आसी व्हिच इज इक्वल टू 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1 okay 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1 अलग अलग एक्सप्रेशन पाई अलग अलग रिजल्ट अछि सो तुमको केवल एडा को मन रखे पड़ो देले बेसी बेनिफिटेड काहे कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट को हम प्रूव कर परिबानी प्रूफ हमें वंस प्रैक्टिस रे कर देतो प्रैक्टिस रे एई जो एक्सप्रेशन अछि ए एक्सप्रेशन को हमें एक्सपांड करके डिफरेंट वे रे एई बळे 15 टा को अधिक एक्सप्रेशन को हमें प्रूव कर परिबा राइट सो C0 रू Cn n plus 1 एटी n केतो अछि ना 10 n plus 1 is 11 okay so the answer will be how much which is equal to 2 to the power 11 minus 1 divided by 11 right 2 to the power n plus 1 minus 1 by n plus 1 2 to the power 11 minus 1 by n plus 1 okay so this is your solutions okay next question for a complex number z if mod of z is equal to 1 then the value of z minus 1 by z plus 1 is test that option is real
purely real, purely imaginary like this. So now complex number z is mode of z is 1. Mode of z 1 सेती बेले पॉसिबल जेते मु कोन करबी ना कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू आइदर मोर 1 थिबो 1 प्लस 0 i थिबो और कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 प्लस 1 i. ओके, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस इज प्योरली रियल, दिस इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज प्योरली इमेजिनरी. कारण ए केस रे जो z नेबी मोड ऑफ z ताले मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. A case रे जदि मु मोड नेबी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन. कॉम्प्लेक्स नंबर जदि a प्लस i भी दियो तार मॉड्यूलस होची होल रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, सेटा यूज करछु ताले कॉम्प्लेक्स नंबर को आइदर मु एटा में एटा को डायरेक्टली पुट कर दउछ. ओके, z minus 1 by z plus 1 जदि मु एटा को z नै छी ताले 1 minus 1 by 1 plus 1. So 1 minus 1 by 1 plus 1 is equal to 0 by something which is equal to infinite. Which is equal to infinite. We can write this is not real. ताले मु 1 plus 0 i नेले मोर रियल हो नाही. जदि मु 0 plus 1 i नेबी सेकंड केस रे जदि नेबी 0 plus 1 i ताले मु z जगह लिखिबी i minus 1 by एटी हेला i plus 1. राइट, i minus 1 by i plus 1 जदि मु सेकंड केस टानिसी ताले i minus 1 by i plus 1 जदि नेली मु एठी तो मु याको रैशनलाइज कर दोछि i minus 1 80 गुणिली 80 i minus 1 गुणिली. ओके, सो मल्टीप्लाई i minus 1 to the numerator as well as denominator we get here. So what we get here, a square plus b square minus 2ab divided by 1 square plus 1 square. Right, I plus 1 into I minus 1, this is 1 square plus 1 square because I square is minus 1. Okay, this is I square, I plus 1 into I minus 1 minus 1 square. Right, I square minus 1 square. So I square is how much? Which is equal to I square is minus 1 plus 1 minus 2i divided by I square is again minus 1 minus 1 minus 1. A square minus b square, it is also minus 1. So you cancel it minus 2i divided by minus 2. This is called simply I. This is called simply I. ताले मोर जो z minus i by z plus i जोटा हम बाहर करथली z minus i by z plus i बा i minus i by i plus 1 जोटा हम कहले i minus 1 by i plus 1 से mo जोटा बाला i बाला तेनु गोटे ऑप्शन का होछि it is purely imaginary. The number is purely imaginary. Right, so take a screenshot. So if z is equal to cos theta plus I sin theta, then z to the power 100 plus 1 by z to the power 100 is equal to how much? So ये ଗୋଟେ complex number problem. So एठी हम जे सॉल्यूशन करेगा, सॉल्यूशन रे मो पाखरे जदि मो z अछि मो पाखरे cos theta plus I sin theta ताहले मो 1 by z मो पाखरे हबो cos theta minus I sin theta ई हबो 1 by z. राइट, आओ मोटी जदि z to the power n करिबी ताले which is equal to ये तो जानि छी 1 by z is why 1 by z is cos theta minus I. This is basic. Now cos theta plus I sin theta to the power n. Now z to the power n is equal to cos theta plus I sin theta to the power n. So to the power n is माने हम एटी d Moivre's theorem यूज करेंगे. Using d Moivre's theorem, what we have cos n theta plus I sin n d Moivre's theorem. Okay, and here also we get 1 by z to the power n because to the power whole to the power n is equal to 1 by z to the power n because 1 to the power n is equal to 1. So here also we have cos theta minus I sin theta all to the power n which is equal to cos n theta minus I sin n.
right? Cos n theta minus I sin n theta. Now is adding these two. This plus this is equal to this cancel. So cos n theta 2 cos n theta. Now what's z to the power 100 1 by z to the power 100 is equal to 2 cos n theta 2 cos 100 theta. This is the answer. Okay, 2 cos 100 theta because here n is equal to 100. This is equal to 2 cos 100 theta. And after subtracting, when you subtract 1 by z to the power n from z to the power n, this means z to the power n minus 1 by z to the power n is equal to this minus this. So it will I sin n theta plus I sin n theta 2 I sin n theta. Okay, in case of subtraction. In case of addition, it is 2 cos 100 theta. Okay. So next problem. The next question is a very basic question. The distance between two lines. So here two lines are clearly parallel lines because two lines, both these two lines satisfying the condition a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Right? So if L1 is a line is a1x plus b1y plus c1 0, and if L2 is another line which is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, L1 parallel L2 if and only if for these conditions a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Right? So ये parallel line है, already parallel line है. कहीं a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Right? तो ये a1 by a2 b1 by b2 not equal to c1 by c2 parallel line वाला तो parallel line दीटा भितरे distance केते हमको रेडिमेट फॉर्मूला था. ओके, मैं लिखि दूची यदि ए दीटा parallel line बनिबो then distance between L1 and L2 which is equal to D, you can write D is equal to either C1 minus C2 or C2 minus C1, C1 minus C2 magnitude divided by A1 square plus B1 square root over. Right? This is also magnitude because the distance is always positive. Now C1 minus C2, this is A1, B1, C1, A2, B2, C2 to C1 minus C2. So here distance is equal to 2 minus of minus 8 divided by A1 square plus B1 square, 3 square plus 4 square whole root over 4 magnitude. Now which is equal to 2 minus minus plus 8 which is equal to 10. 10 by whole root over 3 square plus 4 square equal to whole root over 5 square which is 5. Now the answer is 2. Right? The answer is 2. Okay, next questions. So next problem is also very interesting problem. If the line y is equal to mx does not intersect the circle x plus 10 whole square plus y plus 10 whole square is equal to 180, then the possible development. तो से कहूची गोटे सर्कल अच्छी मु डायरेक्ट सर्कल बनेली मो पाखे गोटे सर्कल अच्छी आ सर्कल रो सेंटर होची -10 x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. Okay, so I can write like this: x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. R square means 6 root 5 whole square. So here r is equal to 6 root 5. Okay, मैं फिर सिंपलीफाई कर लेते हैं. तो एठी से कौन कहूची से कहूची गोटे लाइन अछि जो लाइन ता y is equal to mx or the line is let this the line. So this is the line, here line अछि. So this is the line. This line is y minus mx is equal to 0. Mo y is equal to mx no y minus mx is equal to 0 is. से कहूची ये लाइन ता intersect करिबो नाही, does not intersect. If this particular line does not intersect the circle, then the line will be outside the circle.
जदि लाइन टा सर्कल को इंटरसेक्ट करूनी ताने लाइन टा सर्कल बाहर अछि जदि लाइन टा सर्कल बाहर अछि नाउ वाच ए डिस्टेंस टा ए जो टोटल डिस्टेंस दिस मींस द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल center of the circle and the line is greater than that of radius ताले ए डिस्टेंस टा रेडियस टू बड़ा ओके so distance must be greater than radius I am writing so the distance the distance between the center and the line distance between the center of circle and line okay should be greater than what radius should be greater than radius तो हम सेटा यूज करछु बेटी लिखली distance is greater than radius now distance is equal to distance of a straight line from a point मु यूज कर दोसी ताले मोटी y जगह -10 पुट करिवि -10 आउ माइनस ऑफ +10 ने पुट करलेठी डिवाइडेड बाय a square plus b square whole root over 1 square plus 10 square whole root over is greater than equal to 6 root 5 मटे greater than equal to लिख पाई जदी ए लाइन ला के टच करू छै ताको हम इंटरसेक्ट पाइबा राइट तो इंटरसेक्ट करूनी माने आइदर इक्वल टू थिबा नले ग्रेटर देन बी ये गोटे आसन तो देखो मटी को कांसेप्ट यूज करछि ए कांसेप्ट यूज करछि गोटे x1 y1 पॉइंट रू गोटे लाइन जदी ax by c is equal to 0 थिबो ता भितर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज d this distance is d and this distance is d and this d distance is ax1 by1 plus c by a square plus b square whole over magnitude this is the distance तो मैं theoretic यूज करछि या खाली सिंपलीफाई करबी which implies that minus 10 plus 10m whole square okay is greater than equal to 180 into 1 plus m square right so ये को square कर ये square आएगा ये square both sides square so now which implies that 100 plus 100 m square minus 200 m is greater than equal to 180 into 1 plus m square right which implies that so it is move 100 common नहीं जाउछि 100 into 1 plus 10 common नहीं जाउछि मोटी तले रहि जाउछि मो पाखे 10 plus 10 m square minus 20m is greater than equal to 180 into 1 plus m square तो 10 कटि गला मो पाखे तले रहिला 10 plus 10 m square minus 20m तो मु डायरेक्ट इक्वल टू लिखि दोछि ग्रेटर देन इक्वल टू मके सिंपलीफाई कर देबी इक्वल टू 18 plus 18m square गोटे साइड पर आछि सो 18m square एपट पर आसला राइट साइड पर आसला ताल पर आसला 8m square 18m square minus 10m square ओके minus 20m का तुम राइट साइड प्लस हैला plus 18 minus minus 8 is equal to 0 राइट मु 4 कॉमन नै जाउछि 4 कॉमन नै रहला 2m square plus 5m minus 2 is equal to 0 is it this it is plus 8 not minus this is plus 8 तो ये कैंसिल होगा ताले मो पाखे ये मु आपको ब्रेक कर दोछि 2m square plus 2m the addition is 5m this is 4m so 4m plus m I am writing 4m plus m plus 2 is equal to 0 2m into m plus 2 plus 1 into m plus 2 is equal to 0 so m plus 2 into 2m plus 1 is equal to 0 now m is equal to minus 2 and m is equal to minus half minus 2 option अछि कि minus half नै minus 2 भी ताले हमें से तो पॉसिबल वैल्यू कहछि ता माने एठी minus 2 मोर लाइन डायग्राम बने तो छी this is a line diagram ये 0 ये होची minus half ये होची minus 1 ये minus 3/2 ये minus 2 like this ताले minus half पाखरे की होची सब तो पाखरे होची केते minus 1 होची राइट एपड plus 1 minus अपन कर होची तो minus half पाखरे की होची minus 1 so the answer will be option D okay
So take a screenshot and ready for next question. So next question, it is related to vector. So you see, if x and y are unit vectors and theta is the angle between them, this is the given. Then x plus y or magnitude of x plus y is a unit vector if theta is equal to how much? तो it देखि दियो एटी गिवन कौन सी ना गिवन अछि यूनिट वेक्टर x गोटे यूनिट वेक्टर वेक्टर x जदि यूनिट तार मैग्नीट्यूड 1 y वेक्टर सेम जदि यूनिट तार मैग्नीट्यूड 1 ताले से देखि जदि ये भी यूनिट हबो ताले थीटा केते नाउ फॉर x plus y unit vector, this means this is equal to also 1. Okay, theta को यूज करके हमें थीटा बात करेगा now, which implies that x plus y magnitude of whole square, I am using the property now, which is equal to this into this, right? Magnitude whole square is equal to this into this. Now magnitude is 1, or which implies that x plus y, magnitude of vector x plus y is equal to, this is 1 into 1, this means this is equal to 1. Okay, whole square. Okay, again we have the property, our vector our property is a plus b vector of magnitude of square is equal to vector a plus b dot vector a plus b. माने दीटा vector dot product from which implies that I can write after expanding this मु ये particular expression टा मुझे expand करेंगी तारे मु कौन पाएगी ना I get a square use the formula for a dot b magnitude of b cos theta, okay, plus 2ab cos theta plus 2 magnitude of this cos theta is equal to 1, right? Magnitude of a plus magnitude of b plus 2 into magnitude of a magnitude of b cos theta, right? Theta is equal. Now magnitude of y is 1, again y also 1, 2 into 1 into 1 into cos theta is equal to 1. Now right. So 1 plus 1 is 2. Now 2 plus 2 cos theta is equal to 1. 2 cos theta is equal to 1 minus 2 is minus half. Cos theta minus 1 cos theta is equal to minus half. Then cos theta is equal to cos 120 degree. So then theta is equal to 120 degree. Theta is equal to 120 degree. 120 degree we can convert it with pi is equal to pi by 180. 0 0 6 into 2 6 into 3. So 2 pi by 3 which is answer. Okay. So next problem. So next problem, तीनटा vector दिया है इसी, 3 vectors are given, vector A, vector B and vector C, and it is said that the 3 vectors are represented by the 3 concurrent edges of a parallelepiped. So what a parallelepiped is, what a parallelepiped ro तीनटा concurrent edge दिसी दिसी, ये तो parallelepiped, you can write this parallelepiped, okay. So ये got vector this, let this vector is A and this vector is B and this vector is C. Now vector A is 2ik minus 3jk. Vector B is equal to I plus j minus k and vector C is 3i minus k. Okay, now volume. So volume by attributed derived formulas. यदि कौन सी vector कौन सी ଗୋଟେ parallelepiped ର ତିନିଟା adjacent A so given अछि तार वॉल्यूम इज इक्वल टू हमें डायरेक्ट कौन करिवा ना वेक्टर गुडिकर कोएफिशिएंट रो डिटरमिनेंट बात करवा. ओके, सो हियर वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द parallelepiped V is equal to, now find the determinant I j k, we know that this I j k हमें जानिछु तो I रो अछि 2 j अछि -3 k किछि नाही माने दियला 0. ओके, I अछि 1 j 1 k -1
and C ଅଛି this is 3 J9 here ଅଛି -1 okay this is IJK so यार मैं वॉल्यूम मार्क करेंगे यार वॉल्यूम मार्क 2 into -1 -0 plus 3 into -1 plus 3 plus 0 into something now 2 into minus is -2 plus 3 into 3 minus 1 is 2 6 so -2 plus 6 which is equal to 4 you will okay this is the answer right so next part 1 to 10 our first part korichu so again 20 to 40 11 to 40 seta hame next part time kare okay so thank you